Assalamu alaikum. Welcome to Lazeez Cuisine, your favorite cooking show on Iqra TV. My name is Samiya Asim and I'm your host. And of course, today is the third day of Eid. Now, Eid is almost over, but that doesn't mean that the festivities should end. And of course, today we have a recipe with you that is obviously going to be described by our favorite chef, Naheed Ansari. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? I'm good, And alhamdulillah. a very happy Eid third Mubarak. day Eid Mubarak. And a very happy Eid Mubarak to all my Iqra family who are watching, and we are still celebrating Eid because it will go on because it's the holiday season as well, and the children and the elders are enjoying sleeping, eating and visiting people. Oh, well, there's many different ways to celebrate Yes, it. of But of course. course, Apa, we have two guests with us today. Yes. So let's introduce them as well. Bilkul. So I know it's been only a couple of days since I've been back, but it's good to be back with the Iqra family and the team of Lazeez Cuisine. However, during Ramzan, you had met her and she is our guest today for Eid as well. Let's meet Ofera Anis. Assalamu alaikum. Eid Mubarak. वालेकुम सलाम समिया ईद मुबारक to you. ईद मुबारक आपा ईद मुबारक. और जब मेहमान आते हैं ईद पे आपको पता है इतना सीधे हाथ लगाते हैं ओके It's always बच्चों पे नहीं लगाते हैं ना, बच्चों पे नहीं लगाते हैं. Oh yes, and speaking And of I'll put it for budget, you oh both. thank you. Jazakallah. Jazakallah. Well, speaking of budget, today we have a cute little princess with us, and of course, let's meet her as well. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. इतनी प्यारी सी आवाज़ है, आपका नाम क्या है? Very आप खुद pretty बताएं. voice. My name is Chandra Islan and I'm from grade 4. Oh, you're in grade 4. Okay, and how many fasts did you keep? One or two. Oh, One or you're two, small. it's How old okay. are you? I'm 9 years old. You're nine. Okay. Okay, that's good. Did you enjoy your Eid? A lot. Where did you go? I went to my nanny's house. To collect Eidi? Yes. Did you have fun? Yes. Did you get a lot? Yeah, a lot. She will not tell you how much. don't tell anybody. Did you okay? enjoy Eid with your friends and family? Yes. Are you looking forward to Eid again Look at next her. year? Look at her mehndi. Wow. beautiful I love her She's so bangles pretty. too. Yes. And nail polish, the matching blue color, so pretty. So I think she's having a lot of fun dressing up and for Children Eid. enjoy that, है ना? Yes. What about you, Ofera? Do you enjoy Eid as well? Yes, Samia, we did enjoy, and on the first day we used to go to masjid before the prayer, and I do go always with my husband because I have two sons and husband तो मैं ही रह जाती हूँ, तो वो छोटी सी बेटी है, तो I used to go for the नमाज पे, और वहाँ पे पूरे औरतों का इंतज़ाम होता है सारा, और फिर उसके बाद खुद बस होने के बाद हम घर पे आते, then the breakfast and everything all together. Okay, so वैसे आप लोग जो हैं ब्रेकफास्ट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कुछ भी हो जाए ये चीज़ तो बननी ज़रूरी है? शीर बकरीद हो या ईद मीठी ईद हो, शीर ज़रूरी है, उसके बगैर तो ईद ही नहीं नामुकम्मल सी है. इट्स इनकम्प्लीट विदाउट शीर. And with sheer, what else for breakfast? दैट्स कीमा, जो दम का कीमा होता है वो बनता है, अच्छा, कचौरियाँ जल्दी बनती जो हैं, खाना। भुजिया बनती है, आलू की Okay. भुजिया, और उसके अलावा वो बकरीद तो कोई डिफरेंट होता है, हाँ, लेकिन होता इसमें जो दम का कीमा होता है, दम का कीमा और आलू की भुजिया और शीर, ये चीज़ें मस्ट होती है. उसके बाद शामी कबाब वगैरह, फिर देन एंड देयर जैसे जैसे फिर guests आ रहे हैं आते then. रहते हैं, तो वो एक अलग टेबल सेटल होती है. फिर देन ऑन द सेकंड डे इट्स द ओपन हाउस, तो फिर पूरा डिनर मेन्यू और जो एक सपर मेन्यू होता है, वो सारी चीज़ें एक सेटल होती है, वो डिसाइड होता है, बनता है, सस्ता रहता है, निकलता रहता है, लगता रहता है. Well, you look lovely, mashallah, Thank and I'm you, sure कि you're Samia. enjoying Eid as well. चाहे छोटी लड़कियाँ हों या फिर of course अच्छा, बड़े यहाँ मैं adults एक हों. बात कहूँगी, when you just blessed with a daughter, तो उसके बाद फिर आपकी ईद ख़त्म हो जाती है. फिर you always do prepare for her कि उसकी बैंगल्स आ जाएं, उसकी चूड़ियाँ आ जाएं, उसके मेहंदी लग जाए, उसके कपड़े बन जाएं, ये है और ना, आजकल बच्ची तो आ गई, एग्जैक्टली चूड़ियाँ पूरी, ओहो हो, Wow. so pretty. और hands भी इतने pretty हैं. The color has come so nice, है ना? बेटियाँ घर की रौनक होती हैं, बेटियाँ no घर की doubt. रौनक रहमत, होती हैं, अल्लाह की रहमत है. रहमत है. एग्जैक्टली. तो आपा आज जो है हम लोग ईद के बारे में बात कर रहे थे, ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहे थे, ट्रेडिशंस के बारे में बात कर रहे थे. Tell us, Apa, what are we going to be making in the kitchen today? Because रमज़ान के बाद वाकई इंसान थक जाता है, बट वो आप में एनर्जी ऐसी आती है बिकॉज आपके पास गेट्स सारे होते हैं. जैसे मेरे घर क्या होता है, जस्ट शेयर विथ यू, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ द एल्डेस्ट, तो नाश्ता हमारे घर होता है. बिफोर नमाज माई हस्बैंड ब्रदर्स और माई ब्रदर दे ऑल कम ओवर, फिर साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, बिकॉज ये शुरू से हम देखते रहे हैं, एंड दिस इज इट्स गोइंग ऑन. देन दे कम बैक फॉर ब्रेकफास्ट,
फिर सब नाश्ता करते हैं, देन फिर वो सब अपनी बहनों के यहाँ, लाइक माई नन्स हाउस, सलाम करने बच्चे सब जाते हैं. सो दिस इज़ द वे यू शुड सेलिब्रेट. आई वुड जस्ट टेल एवरीबडी, बिकॉज जब आप ये वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं आपके बच्चे सीख रहे होते हैं. True, बिल्कुल. क्योंकि बच्चों को अगर आपने इस वक्त नहीं सिखाया देन बिकम्स टू लेट. फिर बच्चे बड़े होके कहते हैं हमको वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, और वो पहचानते नहीं रिलेटिव्स को. तो यू नो सबको सलाम करने, एक तो चांद रात पे सलाम होता है जो चांद रात पे होती है, और एक फिर ईद के दिन होता है. So I think you all must be doing the same, because these are the values which you should follow, and when you follow the values everybody becomes happy. बड़ों को इज्जत देना बहुत ज़रूरी होता है. हर दिन स्पेशल है, मगर चांद रात, ईद, जब आप सलाम ही कर लेते हैं ना तो सब बड़े खुश हो जाते हैं कि बच्चे हमें याद रखें. बिल्कुल. So I would just tell all you young mothers, please do this, because बड़ों की इज्जत करना it's priority. True. Because if आप बड़ों की इज्जत करते हैं ना तो बच्चे जब बड़े होते हैं वो आपकी भी वही कर रहे होते हैं, and this cycle goes on. So this is what Exactly, we you have to treat do. others how you would like to be treated. Because see now you asked her, she said we went to the nani's house. तो वो जो बड़ों का नानी, दादी, फुप्पियाँ, चची, ये बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं. Please love them. Please take care of them. Before it becomes too late. Definitely. और आज जो मैं बना रही हूँ ये आप पूछिए. I am making something very easy. और वो क्या है? I am making cups. Okay. Not cup saucers. I am making cups of a crispy pastry. और उसमें मैं मीठा भी बनाऊंगी और नमकीन भी बनाऊंगी. Something very easy that जब आपकी गेस्ट आए आपको वो फ्राई करके रखें, बिकॉज जब मेहमान आते हैं आप अगर हर वक्त किचन में, they don't like it and you have to sit with them. तो आपकी कुछ चीज़ें पहले से तैयार कर, क्योंकि जो और भी ममालिक हैं, अरब्स जो हैं, चाहे वो मोरक्कन हो, चाहे वो फ्रॉम दुबई हो, चाहे वो व्हाटएवर सऊदीज़ हो, ये ईद की तैयारी हम भी 3-4 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं. और ये बहुत अच्छा लगता है जो घर के बड़े तैयारी कर रहे होते हैं. जब आप तैयारी कर लेते हैं फिर उस दिन आपको लेस काम होता है. लेस भी होता है, लेकिन वो प्रिपरेशंस के दिन जो है वो आपके लिए खुशी का टाइम बन जाता है, क्योंकि आपको एक्साइटमेंट होती है कि तैयार हुए हुए, मतलब हल्का फुल्का सा काम होना चाहिए कि आप तैयार भी हुए हुए हो, गेस्ट आए हैं. हाँ, हर चीज़ आपकी तैयार है, बस आपको असेंबलिंग करनी है और आप सर्व कर दें, ताकि ऐसी चीज़ें अपना मेन्यू पहले से बनाएं कि लोग भी इंजॉय करें और आप भी साथ टेबल पे हों. So that becomes more happy. Definitely. Yes. So Appa, why don't we head into the kitchen to make this recipe today? Yes, we should head into the kitchen. Why not? Come on. So meanwhile we head into the kitchen, please have a look at the ingredient list so you can take down if you have all of them or not. Sweet and sour cups. Ingredients for the sour filling: boiled chicken cubes 8 to 10 pieces, salt half tablespoon, crushed black pepper half tablespoon, carrots half cup, capsicum half cup, cream 2 tablespoon, mayonnaise 3 to 4 tablespoon, ketchup 3 to 4 tablespoon, soya for garnish. Ingredients for the sweet filling: dates 8 to 10 pieces, chopped almonds 1 cup, chopped pistachios 1 cup, condensed milk half cup, icing sugar as required, gulab jamun for garnish, rasgulla for garnish. Well, now that you've looked at the ingredient list, Appa, where are we going to start? I will just do the filling. And later on I'll show you how I made these cups. Okay, these look very cute though. Yes, you can make small ones, bite size. I did make small ones, but they're quite. I think this is also very good size. One bite. One bite. So ये हमने बनाए और इसके साथ I'll do 2 fillings. एक sour होगा, एक sweet होगा. ठीक है. One इसके साथ what I'm going to do is I'll make it with boiled chicken. These were the things which you could have prepared before Eid. ताकि आपका किचन में जाना. Exactly. ईद के टाइम पे बकायदा पूरी चिकन को defrost कुछ भी नहीं. Nothing. You can just take chicken. If you want, you can add little bit of capsicums, little bit of carrot to give a crunch to it, and you will add cream and mayonnaise. That's right. I have mixture of cream and mayonnaise. You'll add that. You'll add salt and pepper, and that is all. Mix it up. Fill it in the cups. Okay. And then I'll do a little bit of icing on it. Namkeen icing. Okay. And the other one जो है उसकी filling होगी खजूर, बादाम, pistachio, condensed milk. Mix all these things together and then you put them in these cups. ठीक है. So एक sweet होगा
Or what you can do is, I'll show you how to cut them and fry them. You can make smaller ones. I'll show it to you how you can make the small ones. These are quite big, so you can make small ones. तो अभी मैं सिर्फ आपको फिलिंग करके दिखाती हूँ. फिलिंग में you have time to show the filling or don't you, Depends on how long are you going to take. no, it will be very quick. Okay, then we have time. Okay. So I'm just taking, you can take mince, you can take chicken, you can only take vegetables, cabbage, carrot, cucumber, it will be a vegetarian. Okay, you'll just take cubes of chicken. Because many people, I do not want to waste things. If I put capsicum, yes, for decoration, I'll do it. But do not waste your thing, because when guests come over and the children, then they make a face, why did you add the vegetables? So you keep That's right. just chicken. Do you like vegetables? No. No? Because Not the even first- cucumbers? No carrots? Nothing? Nothing. Why? But Nothing. why? Healthy means Yeah, it's all about vitamins, having vitamins through the vegetables and fruits. Fruits तो लेते होगी. what you like, chicken or mutton or beef, what do you like? I like chicken. Chicken. All children like chicken. And do you like fish? No. No. Oh my god. Fish is not a favorite. Okay, do you like sweet food? Sweet, yes. Or do you like savory, which is like normal food you eat? I like some spicy and sweet. Oh, she likes spicy and she likes sweet. And do you like, if your mother orders food from outside, so you like a fish burger? No. No. You don't like a fish burger? No You like- fish in any form. and no fried fish also? No. अच्छा it depends कि अगर बच्चों को बचपन से जो एक इन्फेंसी eating habits होती है ना Exactly. उसमें आप दें तो some You can, mothers you can feed children fried fish if you tell them it's fried But chicken. I'll tell you one thing. These are little gimmicks or tactics. बच्चे कहते हैं ये नहीं, this is all psychological. exactly उन्होंने खाया भी नहीं होता, it's all psychological. अगर आपने उनको cheat करके किसी form में डाल दिया, they will eat it very nicely. very true Don't tell them what is being cooked And now she's and scared. just yeah. And now she's scared. मेरा जो बीच वाला बेटा है he always like refused to eat tende. Okay. And always जब मैं कुछ बनाती तो मैं कहती थी Italian potatoes हैं and he loves to eat potatoes. कहती Italian potatoes और वो बड़े मजे से खाना. Change the name, give a nice name, but you'll have to cheat the kids. Please let them have healthy food, because greens are very good for your Yes. health. They'll thank you later on. Yes. Once they're about your age. Then they'll thank you. It's a long wait, but it's worth it. Because थोड़ी चीटिंग इस फॉर्म में चलती है. बिकॉज बच्चों के साथ चीटिंग नहीं करी तो ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, और वो Malnourished रह जाएंगे. हाँ, ये सब साइकोलॉजिकल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि बस ठीक है. दिस इज मिक्स्ड. अच्छा, इफ द चिल्ड्रन वांट, व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट अ लिटिल garlic sauce or ketchup just on the top for the decoration, and then you can do, अगर बड़ों के लिए आप बना रहे हैं then you can add green, but this is a dish where you should not add green chilies. Okay. ये ज़रा वो वाली local नहीं है. So black pepper, capsicum, these things are good for the elders. Okay, Appa, why don't we take a short break now? Good. I'll do the filling in the break. Okay. After the break, we'll have a quick recap of the recipe. Yes. ठीक है? So let's take a short break. मिलते हैं break के बाद. Meanwhile, have a look at the recipe card so you too can learn how to make this amazing recipe. Sweet and sour cups. Ingredients for the sour filling: boiled chicken cubes, 8 to 10 pieces, salt, half tablespoon, crushed black pepper, half tablespoon, carrots, half cup, capsicum, half cup, cream, 2 tablespoons, mayonnaise, 3 to 4 tablespoons, ketchup, 3 to 4 tablespoons, soya for garnish. Ingredients for the sweet filling: dates, 8 to 10 pieces, chopped almonds, 1 cup, chopped pistachios, 1 cup, condensed milk, half cup, icing sugar as required, gulab jamun for garnish, rasgulla for garnish.